आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. जून म्हयन्यांत स्वदेशी C-295 विमानाच्या पयल्या उड्डाणान भारतान हवाई येरादारी क्षेत्रांत व्हड येस मेळयलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयच्या आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान म्हळां. अशे तरेची 40 विमानां भारतांत तयार करतात अशी म्हायती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. हे खातीर MSME आनी एरोस्पेस मळार नवी चालना मेळटली, रोजगाराच्यो नव्यो संदी निर्माण जाता आनी आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प अदीक घटमूट जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय योग दिसा विशीं लेगीत उलोवप केलें. ह्या दिसा भारताच्या यत्नां मदीं पुराय जग वांटेकार जालें. ह्या दिसा जगभरांतल्या 2,500 वयर वेगवेगळ्या वाठारांनी योग कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयोजीत केल्ल्या योग कार्यावळींनी करोडांनी लोकांनी सहभाग घेतलो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. शेतकारांनी रसायनां मुक्त शेतीचो वापर करचो आनी आपल्या शेत जमनींचें रक्षण करपाक सैमीक साऱ्यांचो चडांत चड वापर करपाची विनवणी प्रधानमंत्री मोदी हांणी केली. चवथ उत्सवा खातीर गणपती बाप्पाची मुर्ती ह्या देशाच्या मातयेंतल्यान तयार जाल्ली आनी थळाव्या कारागिरांच्या हातांतल्यान तयार केल्ली आसा हाची खात्री करून घेवपाचो उलो प्रधानमंत्री मोदी हांणी सगळ्या लोकांक मारला. तशेंच प्लास्टर ऑफ पॅरिसान तयार केल्ली मुर्ती कशीच विकत घेवची न्हय अशें तांणी म्हळां. निमणे प्रधानमंत्र्यांनी उदका संवर्धनांचेर भर दिलो आनी पावसाच्या उदकाचो दरेक थेंब वाटावचो पडटलो अशें सांगलें. कॅच द रेन मोहिमेची गती उणी जावंक फावना अशें तांणी म्हणलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दनपारां सेशल्सचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. पॅट्रीक हर्मेनी हांचे वांगडा द्विपक्षीय चर्चा केली. दोनूय फुडाऱ्यांनी सहकार्याच्या वेगवेगळ्या पैलूंचो नियाळ घेतलो आनी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांचेर चर्चा केली. ते पयलीं स्टेट हावसांत प्रधानमंत्री मोदी हांकां गार्ड ऑफ ऑनर दिलो. ह्या वेळार राष्ट्राध्यक्ष हर्मेनी लेगीत हजर आशिल्ले. शेती, अर्थीक, अंतराळ आनी भलायकी अशा वेगवेगळ्या मळावेल्या करारांची देवाणघेवाण ह्या वेळार जाली. मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है. हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है. हे भेटे मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां पर्यावरण संरक्षण आनी सेगीत उदरगतीच्या फुडारपणा खातीर थंयचो उंचेलो नागरीक सन्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरायझन पुरस्कारान सन्मानीत केले. जोड पत्रकार परिशदेत संबोधीत करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, गार्डियन ऑफ ब्लू हॉरायझन हो सन्मान मेळप ही तांचे खातीर आनी भारताच्या नागरिकां खातीर खूब अभिमानाची गजाल. हिंद महासागर हे सगळ्यांचे वांटून घर आसा आनी ताचें संरक्षण, शाश्वतता आनी समृद्धी ही सगळ्यांनी वांटून जबाबदारी आशिल्ल्याचें मत तांणी उक्तायलें. शेती आनी शेतकार कल्याण आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज विकसीत भारत 2047ची मोख साकार करपा खातीर गांवांची मुखेल भुमिका आशिल्ल्याचें म्हळां. नवी दिल्लींत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संमेलनाक संबोधीत करतना ते उलयताले. गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है. गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं. हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में. गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है.
विकसीत भारताखाला राज्यांच्या वाट्यासयत 1,51,000 कोटी रुपया परस चड तरतूद केल्या. गांवगिऱ्या कामगारांक उदरनिर्वाहाची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करतना गांवगिऱ्या उदरगतीक गती दिवपा खातीर ग्रामीण येवजण आंखल्या अशें तांणी सांगलें. पंचायतींक अदीक घटमूट करपा खातीर आनी गांवगिऱ्या समाजाक सशक्त करपा खातीर पंचायतींक व्हड प्रमाणांत अर्थीक आदार मेळत रावतलो अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.